everyone, I hope all of you are doing good and I am back with a video on crash course on physical world. क्लास 11th के फिजिक्स का शुभारंभ होने वाला है और हमेशा की तरह whenever we start the new course, the first question is about what is science, what is physics, what is chemistry, and that's how we have been studying since class 5 or class 6. So once again, let us define what is physics. So physics, as we all know, is the study of nature and natural phenomenon. रेनबो कैसे होती है, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, वाई डू स्टार्स ट्विंकल, पेड़ से एप्पल हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है. तो इस तरह की जितनी भी नेचुरल फेनोमेनन हमारे आसपास होती है उनके पीछे का साइंस हम पढ़ते हैं थ्रू फिजिक्स. As scientists research and try to explore the physics behind all the natural phenomena, they follow a process. This is what we call as the scientific method. The scientific method has 5 interconnected steps. Step number 1, systematic observation. अगर हम बात करें फेमस साइंटिस्ट सर न्यूटन की, जिन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, तो उन्होंने कीनली ऑब्जर्व किया था दैट द एप्पल फेल डाउन द ट्री टू द ग्राउंड. तो ये उनका कीन ऑब्जर्वेशन था. सो एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ ऑब्जर्वेशन. स्टेप 2, controlled experiments. Because anything, any incident that you notice or see for the first time, that could have happened just by chance. So it is important that we perform a series of experiments just to ensure that this phenomenon keep happening the same way. Step number 3, qualitative and quantitative reasoning. It is also important that we also validate this entire experiment with valid as well as invalid data. क्या काम करता है, कौन सी चीज़ें काम नहीं करती है, इन सारे हर तरह के डेटा के साथ इसे वैलिडेट करना है. स्टेप 4, मैथमेटिकल मॉडलिंग. अगर हम देखें, जब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आया उससे पहले उसका एक मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन आया. फाइनली द लास्ट स्टेप, वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरीज. Now it is very important that we do that final round of verification to ensure that this law holds true universally for all the objects at all the places. For example, this Newton's law of gravitation again was verified well enough and then only put forward as a law. However, several years later, when Einstein's theory of relativity came into picture, it in a way questioned Newton's law of gravitation. Physics और technology में एक गहरा connection सा है. At certain times, physics